and welcome to your class of Common Proficiency Test. How are you all? I hope you all are doing very good. So today we are here to discuss the questions of the first topic of your business economics portion of Common Proficiency Test, which is nature and scope of business economics. तो start करते हैं. Questions are on your screen. Very good evening to the Meritorious School, Jalandhar students. First of all, we are having the question. Economists regard decision making as important. Economist के लिए decision making important है. Why so? Because the resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite और scarce. ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो resources हैं वो क्या है? Scarce है और हमारी जो needs हैं वो unlimited है. Second, it is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy our unlimited wants. This is also quite true, and resources have alternative uses. So all of the above are the right. Next, we are having business economics. Business economics हमारे लिए क्या? Abstract and applies the tool of microeconomics. No, क्योंकि macroeconomics के भी कुछ portions जो हैं वो इसमें यूज हो जाते हैं. वैसे तो माइक्रो के ही यूज होते हैं, but still involves practical application of economic theory in business या incorporates the tools from the multiple disciplines. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस में, और प्लस जैसे डिफरेंट डिसिप्लिन है. फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी जिसमें हम बिहेवियर्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी है, स्टैटिस्टिक्स जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टैट्स कैलकुलेट करने हैं, कॉमर्स जिसका पार्ट ये रहता है, मतलब मैनेजमेंट अगर आप कह लो, तो हम डिफरेंट डिसिप्लिन को यूज करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी, तो दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स में वी यूज द टर्म स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, these are less than number than required. जितने हमें चाहिए उनसे कम है. So have a look on this. Absolute scarcity and lack of resources in less developed countries. ऐसा नहीं है, चाहे वो developed country हो चाहे वो developing country हो, दोनों में नहीं होता. Relative scarcity, which means scarcity in relation to the wants. Yes, we are having more wants than, ये ना less than number than required. जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी वॉन्ट्स है, उसके हिसाब से हमारे पास नंबर कम है. तो वी आर हैविंग ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, व्हाट इम्प्लीकेशन डज रिसोर्स स्कैर्सिटी हैव फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द वॉन्ट्स? वॉन्ट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे पास किस वजह से पता लगता है कि हमारे लिए रिसोर्स स्कैर्स है? नॉट ऑल वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड. यस, कुछ जो है वो क्या रहेंगी? अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे, विच इज वेरी राइट. वी विल नेवर बी फेस्ड with the needs to make the choices. Okay, तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास choices के लिए we will never be faced with the need to make choices. हमें choice नहीं करनी पड़ेगी, but no, economics में हमें choice ही करनी पड़ती है. Why? Because we have infinite wants and limited means. ठीक है. नेक्स्ट, वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वांट्स. हमें कुछ इससे ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हमारी इंडिविजुअल वांट्स कम हो. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स. वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए नए नेचुरल रिसोर्सेज बनाओ. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है कि सारी वांट्स सेटिस्फाई. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था.
इसका मतलब होता है व्हाट ought to be, क्या होना चाहिए, मीन्स दीज आर नॉर्म्स, suggestions. अब ये देखना, planned economies allocate the resources via government departments. Wrong. Most transitional economies have experienced problems of falling output and rising prices over past decades. False. There is a greater degree of consumer sovereignty in market economies than planned economies. ऐसा भी नहीं है. And reducing inequality should be a major priority of fixed income. Yes, this one is right. This one is what should be. जो भी हमारे पास problem है उसका solution क्या होना. Next we are having, in every economic system, scarcity imposes the limitations on. Limitation किस चीज के ऊपर? Scarcity हर जगह देखने को मिलती है. हाउस होल्ड गवर्नमेंट और बिजनेस फॉर्म्स में नहीं, ये गलत बात है. लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स में पर फेडरल गवर्नमेंट में नहीं, ये भी गलत बात है. हाउस होल्ड और बिजनेस फॉर्म्स में पर गवर्नमेंट में नहीं, ये भी गलत बात है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, macroeconomics is also called blank economics. Macroeconomics कौन सी economics होती है? That is aggregate economics. That is aggregate economics. An example of positive economic analysis. यानी what is it? क्या होता है ना? Analysis of the relationship of price of food and quantity purchased. This is showing a kind of analysis ना. तो क्या है? What is it? में आ determining how much income a person should be granted. ये तो normative हो गया. Determining the fair price of food, normative हो गया. Deciding how to distribute output of the economy, normative हो गया, क्योंकि सब में suggestions देंगे ना, सब में opinions देंगे. So we are having the right answer, option number A. Next, a study of how increases in corporate income tax will affect the national unemployment rate is an example. किस तरह से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का रेट जो है अगर वो बढ़ गया वो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट को असर डालेगा. कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट मींस टैक्स चार्ज्ड बाय द कंपनी. National unemployment is at the aggregate level. So this is a kind of macroeconomics. This is a kind of macroeconomics. Next we are having, which of the following does not suggest a macro approach for India? India के लिए macro approach कौन सी नहीं? Determining the GNP of India, that is gross national. ये macro approach है. Finding the causes of failure of ABC, ये macro नहीं है क्योंकि ये single form की बात हो रही है. Identifying the causes of inflation, ये macro level है. Analysis the causes of failure of industry, this is also on the macro. So we are having option number B. Ram, my corn harvest this year is very poor. Christian, don't worry, price increase will compensate the fall in the quantity supplied. Vinod, climate affects the crop yields. Some years are bad and others are good. And Madhu, the government ought to guarantee that our income will not fall. इस conversation में normative statement जो है वो बनानी है. Normative means kind of opinions or suggestions. Government ought to give guarantee that our income will not fall. ये opinion है, ये suggestion है. This is made by the Madhu and Madhu is. Next, consider the following and decide which, if any, economy is without scarcity. The pre-independent Indian economy where most people were farmers, scarcity was there. Mythical economy where everybody is a billionaire, फिर भी scarcity रहेगी. Economy where income is distributed equally, तो भी scarcity रहेगी. One of the above is correct answer. Next we are having, which of the following is not a subject matter of microeconomics? कौन सा microeconomics का subject matter जो है वो नहीं है? Price of mangoes, no. Cost of producing fire truck for fire department, no. Quantities of mangoes produced in mangoes markets, no. National income and annual rate of growth, this. The branch of my economic theory that deals with problem of allocation of resources.
रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना, उसमें कौन सी ब्रांच डील करती है? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। कौन सी डील करती है? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स का कौन सा सब्जेक्ट मैटर जो है वो नहीं? शुड द फर्म बी इन द बिजनेस? यस, ये बिजनेस डिसीजन मेकिंग के पर्व्यू में आता है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एट व्हाट प्राइस? ये भी बिजनेस डिसीजन मेकिंग के पर्व्यू में आता है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड? ये भी बिजनेस डिसीजन मेकिंग के पर्व्यू में आता है। बट हाउ शुड बी डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट? दिस इज मैक्रो। हमारा राइट आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? नॉर्मेटिव मतलब हमारे ओपिनियंस है ना, व्हाट ऑट टू बी, क्या सजेशन होना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। Minimum wage should be raised to rupees. This is the kind of opinion or solution. India spends a huge amount of money on national defense. Fact that. Is that fact? Right answer is option number C. Which of the following would be considered a topic of study in macroeconomics? Macroeconomics में कौन सा topic जो है वो cover किया जाएगा? The effect of increase in wages on the profitability of the cotton industry. ये तो single industry की बात होगी ना. This will not be a part of it. The effect of steel prices when steel is more important. अच्छा, अगर हम स्टील को ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टील प्राइसेस पे? सिंगल कमोडिटी। Effect of increasing inflation rate on standards of people in India. This one is macro. Next, the difference between positive and the normative economics is positive economics explains the performance of economy, while normative finds out the reason for poor performance. Positive economics describes the facts, normative evaluating some of these are good or bad. Yes, this one is very accurate answer. Positive तो मैं ये पता लगता है कि what is the position, what is the scenario, what is the condition. But normative से हमें पता लगता है कि whether our opinion that whether it is right, whether it is wrong, whether it is good, whether it is bad. Normative economics describe the facts of the economy, while positive economics involves evaluating some of these are good. ये तो गलत है. Positive prescribes, normative describes. No, normative prescribes and positive. Next is, which of the following is not within the scope of the business? Business economics की scope में क्या चीज नहीं है? Capital budgeting, yes, to decide about the capital and to decide about what are the sources to be raised for the capital. Risk analysis, yes. Business cycles, yes, but accounting standards, no. Which of the following statement is incorrect? Business economics is normative in nature. This one is correct. Business economics has close connection with statistics. This one is also correct. Business economists need not worry about macro variables. This one is incorrect. क्योंकि अगर कोविड पूरे वर्ल्ड लेवल पे आया था तो मैक्रो लेवल पे था, तो मैक्रो का असर पड़ता है. एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. दिस वन इज आल्सो करेक्ट. We are having the right answer, option number C. Next, economic goods are considered scarce because why they are, it cannot be increased in quantity. It does not exist in adequate quantity to satisfy the requirements. Yes, its demand is more than the supply. This is the reason. Are of primary importance in satisfying the social requirements? No. And limited to the man-made goods? No. In a free market economy, the allocation of resources is determined by allocation of resources किसके द्वारा determine किया जाता है? Voting done by the consumers, central planning authority, consumer preferences या level of. Right answer is option number C. A capitalist economy uses blank as the principal means of allocating the resources. Resources को allocate करने के लिए क्या main जरिया है? The price. क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं, वो मार्केट इकोनॉमी में काम. Which of the following is considered as the disadvantage
ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट। मार्केट सिस्टम को यूज करके रिसोर्सेज को एलोकेट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है क्या होता है? इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मार्केट सिस्टम में अगर हम जाएंगे ना तो हम डिमांड एंड सप्लाई, जिसका मतलब ये है वेलफेयर इज नॉट प्रायोरिटाइज। इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। पीपल डू नॉट गेट द गुड्स ऑफ दिस चॉइस, दिस इज वेरी रॉन्ग। पीपल कंज्यूमर सॉवरेनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। जो कंज्यूमर पसंद करता है ना, खरीदना चाहता है, उसकी जैसी ही चीजें बनाई जाती है। Many of initiative and enterprise are not rewarded. This is very bad. Rewarded private entrepreneurs तो करते ही नहीं है। Private enterprises में वैसे भी effort से reward होते हैं and profits will tend to be low. Profits कम होंगे, yes. Which of the कम नहीं होते, ज्यादा ही होते हैं। Which of the following statement does not apply to the market economy? Market economy के कौन सी statement जो है वो apply नहीं होती। Firm decide whom to hire and what to produce? No. Firm aims to maximizing profit? No. Household decide which firms to work for and what to buy? No. And government policies are the primary forces that guide the decisions. These do not apply. This is the right answer. क्योंकि सब बाकी मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स हैं। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। ऐसा किसमें होगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा किसमें होगा? कैपिटलिस्ट। Economic decisions are partly taken by state and partly by the private entrepreneurs. Yes, this one is mixed. Capitalist plus socialist. Next, the central problem in economics is that of central problem जो economics में रहती है वो किस चीज की रहती है? Allocating the scarce resources in such a manner that society's unlimited funds are distributed. Next, capital intensive technique would get chosen in a which way? Which way? किस way में capital intensive technique जो है वो use होगी? Where capital surplus economy, where the relative price of the capital is lower. ठीक है, जहां पे आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का प्राइस कम मिलेगा, आप वहां पे चूज। Which of the following is not one of the four central questions that study the economics? हमारे क्या होते थे क्वेश्चन? What to produce, when to produce, and how to produce. यही होता था ना? नहीं, what to produce, for whom to produce, and how to produce. What, for whom, एंड हाउ, ये तीन क्वेश्चंस थे हमारे। पहले वाला तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं था क्योंकि प्रोडक्शन तो चलती रहती है। नेक्स्ट इज लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्शन होगी अगर आप गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो। किन गुड्स को आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे? ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स को, क्योंकि कैपिटल गुड्स हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन। Next, the economic system in which all the means of production are owned and controlled by the private individuals for profit. What is that? That is capitalism. That is known as capitalism. Macroeconomics is the study of, macroeconomics किस चीज की study है? National economy, global economy, all aspects of scarcity, ये micro है. Big businesses micro है. Decisions of individuals micro है. And macro is only B. Next, freedom of choice is the advantage of, freedom of choice किस चीज का advantage है? Advantage B option right answer. Exploitation and inequality are minimal under, किस केस में हमारी exploitation और inequality जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है? This is very very minimal. That is administered prices refers to, administered prices का क्या मतलब होता है? Prices determined by demand supply? No. Prices determined by sellers? No. Prices determined by external authority? Yes. Why so? Because administration via administration. In economics, the central economic problem means, economics में central economic problem का मतलब क्या होता है? Output is restricted to the limited availability of, that is right.
Scarcity definition of economics is given by scarcity की definition. Alfred Marshall ने तो wealth definition दी. Sorry, Adam Smith ने wealth. Robinson ने दी है scarcity. ठीक है? Science which deals with the wealth of nation is given by Adam Smith, who is also known as father of economics. Which of the following is not one of the features of capitalist economy? कौन सा capitalist economy का feature जो है वो नहीं है? Right to private property, no. Freedom of choice, no. No profit, no loss, yes. There is the need of economic study because resources are limited, wants are unlimited, resources are unlimited. Economic study की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है because resources are unlimited, no. Resources are limited, wants are unlimited. Both A and B. Next, the benefit of economic study is economics को पढ़ने के फायदे क्या हैं? It enables to examine the problem in the right perspective. सही दिशा से हम लोग problem को पढ़ पाते हैं. Managerial economics क्या है? It is applied economics that fills the gap between the economic theory and the business. Right? It is just a theory concept. No, it involves practical business application. Practical application. Trains the managers how to behave in recession. No. And provides the tools which explain the various concepts. So what we are the right answer? A option में सारे summarize हो जाते. Which of the following statements is correct? Microeconomics is important for study of particular household and particular firm. Okay. Macroeconomics is important for study of economic conditions of country. Both are right. The option is the right answer. Mr. Satish hired a business consultant to guide him for the growth of the business. Consultant visited his factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability, and so on. So, which approach is that consultant using? Microeconomics. कौन सी approach we use करना? Profit motive is the merit of socialism. यही उसका. Profit motive is the merit of blank. Capitalism. Right answer. Blank is also called command economy. किसको command economy भी कहा जाता है? Socialist, capitalist, mixed economy. Yeah, none of the above. The right answer we are having option number A. Socialist is also known as command economy. Why? Because all resources are under government. That's it. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करवाऊंगी, दैट विल बी डिमांड. ठीक है, दैट विल बी theory of demand. So be ready with that. Till then, good evening. Bye bye. Take care. Rest well.